डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन ग्रो स्ट्रॉन्ग। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज इंटाइटल्ड एज नेचर ऑफ मोटिवेशन। एज वी नो दैट मोटिवेशन मीन्स समथिंग which energizes, boosts, prompts, either pulls or pushes an individual to act in a desired manner in order to achieve the goal। यानी कि हम अपने गोल को हासिल नहीं कर सकते हैं विदाउट द मोटिवेशन। मोटिवेशन ज़रूरी है हर कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, द मोटिवेशन फोकसेस ऑन द कॉजेज ऑफ बिहेवियर and to know the reasons of human behavior. It depends on nature of motivation. The following points will highlight or describe the nature of motivation. Number 1, psychological. Dear students, the nature of motivation is purely psychological. It means it is related to human mind. As we know that human mind includes interests, wills, wishes, motives, desires, feelings, emotions. I mean to say you जो एक human being का behavior है it is deposited in the mind. That is why it is rightly quoted by the trait psychologists. Personality of an individual lies in the brain. नो ब्रेन नो पर्सनैलिटी। यानी कि जो हमारा पूरा बिहेवियर है या एक इंडिविजुअल का कंप्लीट पर्सनैलिटी मेकअप जो है इट इज डिपॉजिटेड इन ह्यूमन माइंड। नंबर 2, नेवर एंडिंग और कंटिन्यूअस। डियर स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ मोटिवेशन इज नेवर एंडिंग। आई मीन टू से यू इट इज कंटिन्यूअस। As we know that satisfaction of one need gives birth to the next need. According to Abraham Maslow, man is having series of needs. In order to understand the nature of needs, we have to go through the Maslow's model, which is known as hierarchical model of Maslow. Dear students, मस्लो ने पहले अपने मॉडल में फिजियोलॉजिकल नीड का कॉन्सेप्ट दिया है। इट मीन्स ह्यूमन नेचर फर्स्ट गेट्स मोटिवेटेड टू सेटिस्फाई द फिजियोलॉजिकल नीड। फॉर एग्जांपल फूड एंड वाटर। जब एक इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई होती है बिकॉज इट इज राइटली कोटेड बाय समवन, हंग्री मैन डज नॉट लुक लाइक द आइडोल्स एंड सरमून्स, ही लुक्स द गॉड इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड। क्योंकि फिजियोलॉजिकल नीड जो है इट इज ऑल्सो नोन एज सर्वाइवल नीड। तो सेटिस्फैक्शन ऑफ दिस नीड इज मैंडेटरी, इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ आफ्टर द सेटिस्फैक्शन ऑफ फिजियोलॉजिकल नीड, आई मीन टू से यू बेसिक नीड, अब जो ह्यूमन बिहेवियर है ये मोटिवेट होता है दूसरी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। इन द मास्लोज मॉडल, second need is security need. Security need in the form of house. अब एक इंसान को घर चाहिए या इकोनॉमिकल सिक्योरिटी होनी चाहिए। जब अब उसकी ये नीड भी सेटिस्फाई होती है, नाउ मैन विल नॉट स्टॉप द फंक्शन। इट मीन्स ह्यूमन नेचर अब खामोश नहीं बैठेगा। द ह्यूमन बींग्स वॉन्ट्स टू सेटिस्फाई द थर्ड नीड। एज पर द मॉडल इज कंसर्न, थर्ड नीड includes love and belongingness need. Dear students, जैसे कि हम सब जानते हैं we are the multiple beings. It means within the being there are number of beings. We are physiological beings, we are biological beings, we are intellectual beings, we are social beings, we are emotional beings. By and large we are साइकोलॉजिकल बींग्स। हमें हर एक नफ्स को सेटिस्फाई करना है। मैन एज ए साइकोलॉजिकल बीइंग, इट मीन्स कि हैज टू सेटिस्फाई द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। फॉर एग्जांपल,
If you love someone, you should also like or want to be loved by others. जैसे कि हम माँ बाप के साथ मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, उनसे भी हमें प्रॉपर लव और रेस्पेक्ट मिलना चाहिए. Now, after the satisfaction of third need, love and belongingness need, according to Maslow, there is fourth need, that is self-esteem need. Dear student, self-esteem need वो need है जिसमें एक इंडिविजुअल tries to maintain the self-respect and self-regard. क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, we are multiple beings. हम में फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है, इमोशनल एस्पेक्ट भी है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है, और हर एक एस्पेक्ट को हमें सेटिस्फाई करना है. और एक इंसान की जदोजहद कंटिन्यूअसली रहती है till the individual leads to the highest need, that is known as self-actualization need. Dear students, at the end, we can say that the nature of motivation is never ending. It is continuous. एक नीड को सेटिस्फाई करने के बाद दूसरी नीड पैदा हो जाती है. जब हम उस नीड को भी सेटिस्फाई करते हैं तो तीसरी नीड जन्म लेती है. जब हम तीसरी नीड के पीछे भागते हैं और उसे सेटिस्फाई करते हैं तो चौथी नीड यानी कि जन्म लेती है. इस तरीके से ये सिलसिला कंटिन्यूअसली चलता रहता है टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ द लाइफ. नंबर थर्ड, dynamic. Dear students, as we know that the nature of motivation is dynamic. It means it is changing. Change is the law of nature. Everything and every element undergoes change. There is hardly any aspect or any element which does not undergoes change. Seasons undergoes change. Climate is undergoes change. जैसे कि the winter season is replaced by the summer season and summer season is replaced by the next season. Days are replaced by the nights and nights are replaced by the days. Dear students, same is the case with the human behavior. Human behavior is in the state of flux. जिस तरीके से हर एक चीज चेंज हो जाता है because nothing is permanent. इसी तरीके से human behavior भी चेंज हो जाता है. Our behavior is in the state of flux. For example, dear students, change takes place in our relationships. हम relationships में तब्दीली लाते हैं या चेंज आ जाती है. हम घर बदलते हैं, हम दोस्त बदलते हैं because change is the law of nature. अगर हम एक बच्चे की मिसाल लेंगे, एक बच्चा जो है वो टॉयज बदलता है. आज एक बच्चे को एक टॉय पसंद आती है, ये जरूरी नहीं है कल भी उसे वही टॉय पसंद आएगी. नंबर फोर्थ, goal oriented. Dear students, the nature of motivation is goal oriented. It means it is goal directed. Our behavior gets motivated because we have having some definite goals. क्योंकि इससे पहले भी हमने जिक्र किया है कि motivation is not aimless. It is not purposeless. It is having definite purpose. कोई डॉक्टर बनना चाहता है. The person tries to strive the goal of medicine. किसी का गोल इंजीनियर बनना है, किसी का गोल म्यूजिशियन बनना है, किसी का गोल फैशन टेक्नोलॉजिस्ट बनना है, किसी का गोल फैशन डिजाइनर बनना है, किसी का गोल सपोर्ट्समैन बनना है या कोई और स्किल्ड पर्सन बनना है. We have different goals in our life. It means different individuals have having different goals and they try to strive their goals. That is why we can say that motivation is goal directed. And it is also said by the Abraham Maslow in his model that individual tries to start from the basic needs and try to achieve the highest goal, that is goal of self-actualization. Number fifth, positive and negative. The nature of motivation is both positive and negative. The positive motivation is related to reward, while as negative motivation is related to punishment. Dear students, जैसे कि हम सब जानते हैं, अगर हम एक इंडस्ट्रियल वर्कर की बात करेंगे या वर्कर्स की बात करेंगे,
इंडस्ट्रियल वर्कर्स दे आर वर्किंग लीप्स एंड बाउंड्स, वो बहुत मेहनत करते हैं. व्हाट इज द पर्पज ऑफ टू डू द हार्ड वर्क इन ऑर्डर टू गेट द बोनस, या उन्हें रिवॉर्ड मिल जाएगा. रिवॉर्ड के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं, दिन दुगनी रात चुगनी करके मेहनत करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, कोई पर्सन प्रोफेशनल एग्जाम के लिए पढ़ता है ताकि वो उस एग्जाम को क्वालिफाई करे और उसे पर्टिकुलर स्टेटस मिल जाए या जॉब मिल जाए. एक स्टूडेंट लीप्स एंड बाउंड्स वर्क करता है. द लर्नर अप्रोच टुवर्ड्स द मिडनाइट ऑयल बिकॉज लर्नर इज हैविंग द पॉजिटिव मोटिवेशन. Positive motivation in sense to get the first position so that learner can earn the gold medal. While as negative motivation is related to the punishment, यानी कि इंडिविजुअल पनिशमेंट से बचने के लिए उसका बिहेवियर मोटिवेटेड होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक लर्नर की बात करेंगे, लर्नर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है ताकि उसे माँ बाप की डांट ना खानी पड़ी या माँ बाप की पनिशमेंट ना खानी पड़ी. इसी तरीके से इंडस्ट्रियल वर्कर इंडस्ट्री में काम करता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल वर्कर में सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, मुझे इंडस्ट्री के जॉब से निकालेंगे अगर मैंने वर्क एज पर द नॉर्म्स, एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द इंडस्ट्री नहीं किया है. इसी तरीके से कोई भी एम्प्लॉयर फॉलोज द एप्पल पाई ऑर्डर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, follows the rules and regulations of the institution. If you really enjoyed the lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.